सो ये हमारे पास जो है ना सिनेरियो है, ओके। एंड दिस इज द सिनेरियो ऑफ द मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, राइट। अब अगर आपके पास कोलिजन हुआ, सही है। सो आफ्टर द कोलिजन लेट्स से कि भाई ये सेम पार्टिकल है, एंड आफ्टर द कोलिजन ये आपके पास जो है both are moving in this direction, okay? Both starts moving in this direction, and this one with a speed of 0.8 meters per second, and this one with a speed of v, we don't know, okay? So we have to apply the law of conservation of momentum, and we have to find out कि हमारे पास जो है वो इसमें क्या कुछ हो रहा है, okay? आज अभी देखते हैं कि हमारे पास क्या कुछ हो रहा है, सही है। सो अब आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि भाई इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, ये इनका टोटल मोमेंटम जो है बिफोर द कोलिजन, दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, ओके। सो अब हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करने की करें, सो वी फर्स्ट हैव टू कंसिडर द डायरेक्शन। आई एम टेकिंग द राइट वर्ड एज पॉजिटिव, सही है, एंड लेफ्ट वर्ड एज नेगेटिव, ओके। ओके, सो इफ वी कंसिडर, अच्छा ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, एंड लेट्स से हमें नहीं पता इसकी वेलोसिटी क्या, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, एंड दिस इज नेगेटिव फॉर श्योर, ओके। सो लेट्स जस्ट पुट इट इन द इक्वेशन। सो 2 is a mass plus 0.5 and then plus 4 kg is a mass and then negative 1.2. This is the momentum before the collision, and this is momentum after the collision. So 2 kg with a velocity v, we don't know it. Okay, plus 4 kg times negative 0.8. This is its velocity, right? Let's try to solve. So you will get 1 from this side. You will get negative 4.8, and then 2v is equals to negative 4, 8 is a 32, so 3.2, okay. And if you solve, so negative 4.8 become 3.8, right? And then plus 3.2 is equals to 2v, 2v, okay. And it get 0.6 divided by 2 is equals to v, okay. So you will get v as zero point 0.3 with a negative sign, okay, which means the object will be moving in the same direction, okay. So iski jo velocity aa rahi hai, the negative sign shows that it is moving to the left, okay, with a velocity of zero point 0.3, right? But is that clear? But is that clear? Yes. Perfect. Okay, let's try one more question using the graph, okay. अच्छा जी, so I have two particles, okay. एंड अच्छा मुझे ना इसका क्वेश्चन जरा निकालने दो, मैं खुद बनाऊंगा गलत हो जाएगा। यार ये फाइल कैसे करप्ट हो सकती है यार, अजीब। एस, इसके अंदर पता नहीं होगा या नहीं होगा, अल्लाह जाने। फाइन। अच्छा जी, चलो अब मुझे एक क्वेश्चन मिल रहा है, ये मिल रहा है, ओके। चलो मुझे एक क्वेश्चन मिल रहा है कि भाई मेरे पास जो है एक ऑब्जेक्ट है, और सो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, an object having a mass of 3 kg is moving in this direction with a speed of 4 meters per second, okay. And and it is, let's say, approaching toward the stationary object, okay. Start moving, speed 0, okay, and having a mass of 4 kgs, right? And I have given you guys the graph for this question, and let me have a graph, अगर अच्छा वाला मुझे अच्छी क्वालिटी में मुझे ग्राफ मिल जाए, let's try this one, क्या कहते हो?
ओके, ये हमारे पास आ गया। बैकग्राउंड वाइट कैसे कर सकते हैं हम? बैकग्राउंड वाइट कैसे कर सकते हैं? नहीं भाई, अभी नहीं समझ में आ रहा। खैर, ये मेरे पास आ गया, सही है। मैंने जो है ना, मैंने ले लिया एक्सेस। अच्छा, मैं इसको ना एक काम ही कर सकता हूँ, इसको डबल ले सकता हूँ ताकि जो है ना मेरे पास बड़ा हो जाएगा। सेट हो गया, ओए होए, चेक कर रहे हो आप? अब सही। सो लेट्स से आई हैव द ग्राफ फॉर दिस वन। ओके, एंड ओके, नहीं गलत हो गया, थोड़ा सा नीचे। फाइन। नाउ इनिशियली, अच्छा ये जो है ना मेरे पास ऑब्जेक्ट ए लेट्स से, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी एंड द ग्राफ इज फॉर द ऑब्जेक्ट ए। ओके, ऑब्जेक्ट ए का ग्राफ है। सही है। सो ऑब्जेक्ट ए का जो मोमेंटम है वो 3 टाइम्स 12, 12 आ रहा है। सही है। सो अगर हम इसको ले लें 2, 4, 6, 8, 10, 12। ओके, सो दिस इज 12, 10, 8, and then 6, and then 4, and then 2, and then 0, 0. Okay, and this is like momentum, okay, in Newton second, and this is time in, let's say, milliseconds. Okay, so the graph looks like this. Yeah, yeah, and नहीं नहीं, इतना आसान करेंगे तो फिर मजा कैसा आएगा? तुम लोग ए लेवल के अंदर बैठे हो ना, तुम्हें थोड़ा सा तंग करेंगे। ओके, परफेक्ट। अच्छा जी, लेट्स से कि द टाइम गिवन इज 10, 20, 30, 40, 50, 60। चलो एक छोटी सी जिंदगी तुम्हारी आसान कर देते हैं, इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। परफेक्ट हो गया, सही हो गया। सो दिस इज द ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट ए। सही हो गया। अब यहां से आपने सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपने ये करना है कि भाई, अच्छा वेलोसिटी भी नहीं देता, वेलोसिटी भी तुम लोग यहाँ से निकाल सकते थे इनिशियल। ओके, सबसे पहली चीज, फाइंड द velocity of the particle A after the collision. After the collision, सही हो गया। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ए आफ्टर द कोलिजन। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन है, कोई मुझे बता सकता है कैसे होगा? एनीबडी? कोई हमारे पास आइंस्टाइन या कोई घर वाले बैठा है? यस, एनीबडी, कोई अल्लाह का नेक बंदा? अहमद, खदीजा, नूर, जैन? Um, area enclosed by the graph and the time axis. ओके, दैट gives you nothing bro, क्यों? वो तो मोमेंटम टाइम्स टाइम won't give you anything, and you're interested अच्छा in अच्छा velocity. sorry. Okay, gradient. But that gives you the force, because you know that change in momentum over change in time is basically the force. अच्छा पहले एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये जो मैंने ग्राफ बना दिया है, can you guys understand what this first portion shows you and what this second portion shows you? Okay, and what this third portion shows you? ये क्या तुम्हें इंटरप्रेट कर रहा है ऑब्जेक्ट के बारे में? मतलब इसमें से पहले तुम मुझे ये बताओ कि इन विच, 1, 2, 3, in which portion does the collision occur and how long does it last? Yes, anyone? Second. सेकंड के अंदर। एनी अदर गाइस? खदीजा, नूर, तुम लोग नहीं बोल रहे हो? जैन, खामोश बैठो, क्या वजह भाई? कुछ थोड़ा थोड़ा तो बोलो यार। तुम लोग भी तो बताओ कुछ, क्या कहते हो? जस्ट से इट ताकि मुझे पता चले।
अच्छा जी, भाई हमारे कह रहे हैं कि सेकंड पोर्शन में, भाई एनी रीजन फॉर द सेकंड पोर्शन, या ऐसे ही तुक्का लगा दिए? डिक्लाइन इन मोमेंटम की वजह ओके, एंड डिक्लाइन इन, ओके फाइन। तो आप भी कह रहे हो कि बेसिकली हमने हमें ये बताया कि भाई मोमेंटम सिस्टम के अंदर अगर कंजर्व रहता है तो हमारे पास जो है ना वेलोसिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि हम आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं, राइट? सो सिंस वी आर कंसिडरिंग द आइसोलेटेड सिस्टम वेयर नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर प्रेजेंट, सो द मोमेंटम कैन नॉट चेंज until or unless you have a collision between the two objects, right? So whenever there is a change in momentum, okay, that shows you that there is a collision, okay? So this mean in the second portion, in part B, in part 2, वो आपके पास collision हो रहा है, okay? So जब collision हो रहा है तो आप ये कह दो कि भाई this portion जो है वो आपके पास collision है, फाइन। अच्छा जी, एंड जो ऑप्शन जो फर्स्ट वाला पोर्शन है, दैट शोज यू द मोशन बिफोर द कोलिजन, ओके, बिफोर द कोलिजन, एंड दिस इज आफ्टर द कोलिजन, राइट? इज दैट क्लियर? यस, से। फाइन। अच्छा जी, आपने बता दिया। अच्छा, सो वी हैव the momentum of 12 Newton second of the object A moving before the collision. Okay. And जब आपके पास जो है during the collision, this much amount is basically for the change in momentum, and after the collision आपके पास momentum ये है, so you can read the graph. Okay. So जो आपने graph read किया, so you are getting the value of तकरीबन 5. Yes guys. यस। Hmm. So you know that the final momentum is 5 Newton second, and you know the mass of the object. Okay, so the mass of the object is 5. Sorry, the mass of the object is 3, and the velocity is unknown. Okay, so 3 upon 5 gives you the velocity. 3 1 3 3 1 and 2 बचेगा, so 3 6 1.67, right? Yes बच्चों, समझ में आया ये बात? यप। Okay, so we get the velocity of the object after the collision. Okay, now can you guys find out the velocity of the particle B after the collision? Find the velocity of particle B after the collision. Okay. Yes, anybody? Can anybody help me, please? शुड आई? Yes. लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अपने यहाँ अप्लाई करते हैं, एंड देन लाइक उसका जो फॉर्मूला है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। M1 V1 is equals to, हाँ, ओके फाइन, आप कह रहे हो कि चलो लगा देते हैं। हमें पता है कि भाई इनिशियली वी हैव द मोमेंटम ड्यू टू द पार्टिकल A only and the particle B is not moving. Okay. So initially the momentum is 12 plus 0, right? 12 is due to the first part, the particle A, and B due to the particle 0 for due to the particle B. Okay, and after the collision, we know that the first particle is keep moving in the same direction but with a lesser velocity. So its mass is, okay. So इसका जो momentum हमारे पास आ रहा है वो 5 आ रहा है, सही है, but we want the momentum of the other particle, okay, particle B. So we can just do 12 minus 5, so that gives me 7 is equals to momentum of the particle B. If we try to find out the velocity, so momentum को हम equate कर देते हैं mv से, so मेरे पास आ जाएगी velocity 7 divided by 4 gives me v, 4 1 4, 4 1 4, 3 बचेगा, 4 7 28, so 1.7 and then 5. Okay, क्लियर भाई? कैलकुलेट करके देख लो, मैं अपनी होशियारी कर रहा हूँ, वैल्यू सही आ रही है ये? यस, यस।
अबे गैस, अबे वो मैं भी तो गैस कर रहा हूँ, तुम भी गैस कर रहे हो। यस सर। यस, ओके, फाइन। फाइन। सो गाइस, ये तुम लोग को समझ में आ गया सेकंड पार्ट? ओके। अच्छा, can you guys draw me the graph for the particle B? um Draw the change in momentum for particle B. Okay. Yes, what do you guys do? Can anybody? एक सेकंड में जरा इसको ऊपर ऑपोजिट ऑफ करूं। ग्राफिंग। है, where will it start? हाँ जी, स्टार्ट कहाँ से होगा? सही है, यू आर समवट करेक्ट, बट नॉट कंप्लीटली। मतलब मैं कैसे बनाऊं? अच्छा, अगर आप, चलो मैं कुछ शेप बनाता हूँ, क्या मैं ऐसा बना सकता हूँ? इज इट करेक्ट? यस, इज इट करेक्ट? यस, आई एम आई एम श्योर। नॉट श्योर। ओके। खदीजा, खदीजा कुछ नहीं बोल रही हो, खदीजा कुछ तो बोलो यार। खदीजा, एनी आइडिया? नो आइडिया, समथिंग, नथिंग? कोई आइडिया नहीं है सर। ओके। नूर, आपको कोई आइडिया? सर रेस्ट रेस्ट से शुरू होगा, मतलब जीरो वेरी से। गुड, वेरी गुड। परफेक्ट। सो यूर और फिर सेइंग, इंक्रीज होगा। हम्म, सही है। अच्छा, रेस्ट से शुरू होगा, लेकिन कब तक जो है वो इंक्रीज किस पॉइंट पे होगा? 20 सेकेंड्स। एनी रीजन? क्योंकि ये पार्टिकल ए का भी 20 सेकेंड पे शुरू होता है। वेरी गुड, सही है। और कब तक इंक्रीज होगा? 20 सेकेंड्स के लिए। है, नहीं वैल्यू, यानी अगर आप, मैं यहाँ से, आप कह रही हो कि यहाँ से इंक्रीज करूँ, मैं कितना इंक्रीज करूँ? यहाँ तक इंक्रीज करूँ, या मैं यहाँ तक इंक्रीज करूँ, या मैं यहाँ तक इंक्रीज करूँ, या यहाँ तक इंक्रीज करूँ, क्या करूँ? विच पॉइंट? 7 तक। 7 तक? अच्छा जी। तो आप कह रही हो कि हम 7 तक इंक्रीज कर लें, 7 आगे रहा। सही है, और फिर यहाँ से आगे? सेट? यस। जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब देख लो, समझ लो भाई। देखो, पार्टिकल बी was initially at rest, right? So नूर ने कहा कि we should start the graph from 0 till 20, okay? Because till 20 no collision occurs, okay? वो before the collision वाला हिसाब किताब है, right? And then from 20 to 40 there's a collision, okay? So नूर ने कहा कि you should go from 20 and all the way till 7 unit up, because उस हमने change in momentum of particle B निकाला 7 unit, okay? बिकॉज हमारे पास जो है पार्टिकल भी इनिशियली रेस्ट पे था, एंड आफ्टर द कोलिजन इट हैज अ मोमेंटम ऑफ 7 न्यूटन सेकेंड, सो द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल बी will also be 7 Newton second, okay? So we, अच्छा, but this change in momentum also happen in the same amount of time, okay? अगर ये if this change is occurring in like 20 second, so the change for the particle B should kept for 20 second, okay? And then it should be constant, okay? So यहाँ से हमने उठाया and हमने यहाँ तक कर दिया, right? या तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, you can just count the boxes, one box, two box, three box, and 3.5 box. Okay, so the graph for the A basically goes down 3.5 boxes. So graph for the particle B should go up 3.5 boxes. Okay, and then it should be constant because this is this much long. Um, the collision remains, and then वो आपके पास straight हो गया, right? Is that clear बच्चों? क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? हाँ ना बोलो प्लीज। जी सर, यस। यस। समझ आ गया। सबको हाँ बोलो, कौन के प्रॉब्लम है तो बोलो प्लीज। फाइन, चलो आगे चलते हैं। अच्छा जी, सही हो गया। सो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया, बस आपको ये समझना है कि भाई हमारे पास जो है
इस ग्राफ के अंदर आपने बस ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि भाई आपको जो है चेंज इन मोमेंटम शुड बी चेंज इन मोमेंटम फॉर द टू बोथ ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल इन अपोजिट। ओके, बस ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। ओके, सो द चेंज इन मोमेंटम फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट। ओके, सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ द क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम। ओके, अच्छा, another question that could be of this type, let's say कि अगर आपके पास you have a particle, okay, and you have another particle, okay, and both particles are moving, इसका मास आप ले लो 4 kgs, इसका मास ले लो आप 5 kgs. This particle is moving with 0.8 meters per second, okay, and this particle is moving with 1.8 meters per second, okay, and the particle collide and they coalesce or they combine together, and they're moving with the same velocity. Okay, they're moving with the same velocity, and let's say like this, uh, just touching each other and moving with the same velocity in this direction. Okay, um and having the same mass, 4 kg and 5 kg. Can you guys figure out its velocity? Their velocity, basically. Yes. Anybody? Yes, guys. So which direction is the first ball going Yep, in? in the same direction as the first one. Uh, They both are in the same, moving in the same direction. Okay. You may apply conservation of momentum again. Okay. Yes. And then, Like 1.8 multiplied by 4 plus 0.8 multiplied by 5 is equals to um, V multiplied by 4 okay, plus V and multiplied by 5. वेरी गुड भाई, बेहतरीन, बिल्कुल से बता रहे हो. सो आपने कहा कि 4 into 1.8 plus 5 into 0.8 is equals to 4 into V plus 5 into V. Okay. So that gives you 4 times 2, 8, and 4 twos are 8. So 7.2. So yeah, plus 5 is a 44. Okay. And is equals to 5 plus 4, 9V. And that gives you 7.4, 8.4, 9.4, 10.4, 11.4, 11.2, not 4, divided by 9. निकाल दो भाई कितना आ जाए. 1.24. 1.24. 1.24. Okay. So this is the velocity with which they're moving. Okay. बच्चों क्या ये बात क्लियर हो गई? एनी प्रॉब्लम? अच्छा जी, ये हमने कर लिया है. अच्छा जी, चलो एक और लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन. इट इज वेरी सिंपल बट इट इज रादर कंफ्यूजिंग. ओके, let's say I have one particle moving in this direction, okay, with a speed of 5v, okay, with a speed of 5v, okay, and having a mass of mx, okay, and the other particle is, for now it is stationary. Okay, भाई साहब इतना बड़ा बड़ा बन रहा है ये, थोड़ा छोटा. Okay, so another particle is, for now it's stationary, but it is my. Okay, and after the collision they both collide and they combine and they move off with the same velocity in the same direction. Okay, तुम लोग के लिए चैलेंज है. सही है. They're moving with a velocity v in this direction. Okay, after the collision, this is before and after. Okay, you have to prove, you have to prove, you show that mx over, sorry, my over mx
should be equal to 4. Okay, challenging question है, but just try it. Okay, just try it. Just one question. Okay, just give it a try, and then we'll discuss. एक क्वेश्चन की जो बोलिए सेकंड बोलिए. बॉल है वो भी 5D से मूव करी है. नहीं नहीं, for now it's stationary. It is stationary for Uh, now. Okay. Hmm. Let's try. Okay, Noor done. Sure. Okay, so you just need to do is mx 5v is the initial momentum plus 0. This is the initial momentum, total initial momentum, and after the collision, mx plus my times v is the final momentum, right? So 5 mxv is equals to mxv plus myv. Okay, when you take mxv to the other side, you'll get 4 mxv equals myv, and you can cancel v and v, and 4 remains this side, my over mx. Very good. Okay, ये चीज आपकी पूरी कंप्लीट हो गई, राइट? मोमेंटम इज लाइक पूरा कंप्लीट हो गया. नाउ वी हैव वन मोर कॉन्सेप्ट इन द मोमेंटम, एंड दैट इज द एनर्जी कॉन्सेप्ट. ओके, सो अच्छा जी, उसको भी देख लेते हैं कि भाई एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है. अच्छा, इसके अंदर कैंट वी डू एनीथिंग? नोप. ओके, सो energies in momentum. Okay, so if we discuss the energies in momentum, so basically we have two type of energies in momentum. Okay, so the first is the kinetic energy, kinetic energy. Okay, and the other is the total energy, total energy. Okay, since there isn't any vertical or horizontal motion taking place, so like the vertical motion taking place, so that is why we can say that there's just be the there's just be the total energy, and no initial energy. Okay, so if we talk about if we talk about the kinetic energy. Hmm. Okay, so if we talk about the kinetic energy, so if kinetic energy remains the same or remains conserved in a system, then that system will be called the elastic system. Okay, or elastic collision. Okay, so we say elastic collision for the system. अच्छा जी, collision where kinetic energy remain conserved. Okay, which mean
conserve, which means you can just find out the initial kinetic energy and final kinetic energy and you can equate them. Okay. So total, yeah, हम ये लगा देते हैं. Sum of the kinetic energy before the collision. पूछो पूछो कोई मसला नहीं ब्रो. अच्छा जी. Our ability of doing work transfer from an object to another object and how can transfer some like the ability. Okay. देखो ये जो आप सोच रहे हो ना, you are imagining the ability in term of like जो हमारे एक्चुअल वर्ल्ड है, जो हम रियल वर्ल्ड के अंदर जिस चीज को एबिलिटीज कह रहे होते हैं, आप उसको उस फॉर्म में सोच रहे हो. ओके. Over here in physics, when we talk about the ability to do work, so over here, ability only mean that something changes its position in some world, in some interfere, or आप कह लो एक एक पूरे सिनेरियो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अंदर अगर आप कोई पोजीशन चेंज कर रहे हो, इलास्टिक पोटेंशियल इलास्टिक फील्ड है, इलास्टिक सिस्टम है, उसके अंदर अगर आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, सो यहाँ पे जो साइंस के अंदर, जो फिजिक्स के अंदर जो एबिलिटी का वर्ड है या एबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज जस्ट रिलेटेड विद द पोजिशनल चेंज of any object. Okay, so this is what we call the ability. Okay, ability to do work means if something is changing position. Okay, that's it. और एक किसी specific domain के अंदर. Okay, मतलब अगर if you're talking about the gravitational domain, so if the object goes up or down, so it is basically changing the it is basically changing the position in the gravitational domain. So it will either gain the energy or gain the ability, or if it coming downward, so it will lose that ability or it will lose that energy, right? So ability is just mean that it changes, the object changes its position. Okay, or either in the form of increase or in the form of decrease. Okay. हाई हाई. अच्छा. अरे ऐसा क्या. बेहतरीन भाई. ओके. आ जाओ. खैर. सो ऐसे यहाँ पे बस इसका ये मतलब है, मतलब जो एक्चुअल वर्क डन होता है हमारी जिंदगी में और जो वर्क डन होता है जो फेस वाला होता है, दे आर डिफरेंट. ओके. सो इसी वजह से जो एबिलिटी है जो हमारे अंदर होती है इंसानों में, और जो एबिलिटी जो है वो उसमें होती है, यानी मैटर के अंदर होती है एनर्जी की फॉर्म में, दे आर डिफरेंट. ओके. खैर. सो अच्छा जी. सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इलास्टिक कोलिजन आ गया. इलास्टिक कोलिजन के अंदर वी सेड दैट collision where the kinetic energy remain conserved. You just need to find out the initial kinetic energy of all the particle moving in the system or collision or colliding in the system, and then you have to do the similar thing for the for the after the collision. Okay, and just equate them. Okay, if both are equal, then you'll you can say that the collision is elastic, right? This normally happens in microscopic level where the particles collide with the wall of the container and they bounce back, right? So but over here in like macroscopic system where like the bigger particles are we are dealing with, so उसके अंदर जो है वो हमारे पास kinetic energy most of the cases के अंदर conserve नहीं होती. During the collision some of the energy convert into heat, into sound, into thermal, into some other form. Okay, so yeah. So most of the cases you will get the kinetic energy before the collision greater than the kinetic energy after the collision. It's not possible that during the collision there's some energy being input in the system and after the collision you'll get the kinetic energy greater than before. Okay, so but ऐसा हो नहीं सकता. सही है. खैर. So ये आपके पास जो है ना elastic collision. Okay, so this is the elasticity of the collision. Okay, but okay, if the before the collision and after the collision kinetic energies are not equal, you can say that the collision is inelastic. Okay, and then in the second case the total energy, so total energy in the system always remain conserved, right? Because the total energy is basically the summation of all the energy, whether it is lost, whether it is present, or whether it is in any other form. Okay, so you just need to sum up all of them and it will always conserve. Okay, so always conserve.
always conserved. Okay. Acha, in both of the cases, the momentum remain conserved. Okay. Whether the kinetic energy, whether the collision is elastic or inelastic, the momentum remain conserved, and the total energy will always remain conserved. Okay. So momentum remain conserved. Okay. Momentum remain conserved. Okay. And in this case, momentum remain conserved. Okay. And that's it. Anyway. सो मोमेंटम इज ऑल्सो डन. ओके. अच्छा, मेरे पास जो क्वेश्चंस की फाइल थी वो करप्ट हो गई है, काइनेमेटिक्स की जो मैंने तुम्हें भेजी थी. बाकी पूरा सब कुछ एक्सेल का उड़ गया. सही है. और आई बी दो बोर्ड थे जो कि उड़ गए मेरे पास, और दो बोर्ड थे जो बाकी हैं, तो इसलिए आई वोंट बी एबल टू गिव यू द क्वेश्चन राइट नाउ. सो मुझे ज़रा थोड़ा सा टाइम दो. I'll compile them all and then I will give you. Okay. सही है. सो आई एम सॉरी, मैं अभी नहीं दे सकूंगा, बट मैंने उससे कुछ क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को करा दिए. मोस्ट ऑफ लाइक इसी तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं. सही, आपके पेपर में आ रहे होते हैं. सही. बट आई विल गिव यू द क्वेश्चन इंशाल्लाह इन 1 or 2 days. ओके. एंड आई वांट देम ऑल ऑफ देम डन बिफोर फ्राइडे. ओके, कमिंग वाला फ्राइडे. सही हो गया. एंड और क्या है, और क्या है, बस सही हो. बस फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना फोर्सेस स्टार्ट करेंगे. एंड इन फोर्सेस वी हैव टू cover up the vectors. Okay. And it will going for a bit longer period. Okay. थोड़ा 2 हफ्ते तक शायद चलेगा वो चैप्टर. एंड उसके बाद जो है बाकी सब चीज़ें छोटी छोटी सी. सही. बाकी सब इसके बाद बाकी सब चीज़ें छोटी छोटी सी हैं. एक वो जो है ना बल्क प्रॉपर्टीज जो है ना वो बड़ी है. 2 चैप्टर बड़े हैं. सही है. तो बस ये 2 चीज़ें, उसके बाद विल हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह. कोशिश मेरी है अक्टूबर के एंड में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. अक्टूबर नवंबर के स्टार्टिंग में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. ओके. चलो बस. चलिए बस. आज के लिए इतने रखते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे. ओके. टिल देन टेक केयर गाइस. अल्लाह हाफिज़. Office. Like, हाफिज़. हाफिज़. Raffles, अल्लाह हाफिज़.